Excellency Dr. Muhammad Ashraf Ghani, President of the Islamic Republic of Afghanistan, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Excellencies and distinguished guests, I welcome you to this ceremony for the signing of a Memorandum of Understanding between India and Afghanistan for construction of the Lalandar Dam, also known as Shatut Dam, in the Kabul River Basin. To begin with, I have the honor to invite His Excellency the President of Afghanistan to make his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Prime Minister, Excellencies, Foreign Minister and Foreign Secretary, Mr. First Vice President, Second Vice President, members of the Cabinet, all distinguished colleagues. Mr. Prime Minister, it's a singular honor to be virtually with you on this auspicious occasion. Your attention to Afghanistan and your offer of gifts of life and livelihood to the people of Kabul and Afghanistan symbolizes the values of decency, democracy, humanity, mutual interest, mutual respect, and mutual trust in our interdependent world. First of all, let me express the deepest sympathies of the Afghan people and government on the adverse impacts of COVID-19 on the lives and livelihoods of people of India. We are confident that with your stewardship, India would once again overcome this great adversity and be again an engine of growth of Asia and the world. Your decision to provide us with 500,000 doses of the vaccine at this critical time when Indians themselves are looking for every single vaccine could not be a greater gift. These doses will be administered to our frontline health workers, our heroic security forces, and vulnerable people. We cherish this act of exceptional generosity. Shatut. How do Kabulis measure the relative value of gold in snow? By our proverb, may Kabul be without gold, but not without snow. With Shatut Dam, Kabul's snow and rain will be harnessed to quench the thirst of around 2 million citizens through provision of water security. Shatut will inject sufficient water into Kabul River to make it once again a hub of greenery, reforestation, entertainment, and art and craft. With Shatut Reservoir and solar pumps, we'll be able to implement our vision of restoring Kabul to the natural beauty that captivated the imagination of Babur and generations of renowned poets across the millennia. On behalf of the people of Kabul and Afghanistan, let me thank you and the great people of India for offering the gift of water, flowing life to us in addition to the gift of the vaccines. Your assistance, Mr. Prime Minister, under your leadership, over $3 billion contribution has been made to Afghanistan, and its uniqueness is that 90% of this assistance is on budget. It reflects our priorities. It provides the foundations of Afghanistan's democratic stability and prosperity. You've come, India's assistance is now iconically marked on our landscape, from Salma Dam to the transmission lines to the Parliament of Afghanistan, a symbol of our democracy, to hundreds of projects that have dealt and changed the lives of people, but particularly in the area of human capital. 1,000 scholarships per year. Now 16,000 Afghans are studying in India. Each of these is linking hundreds of thousands and
the ties that we have had across millennia now are multiplied billionfold. We thank you deeply, but in addition, India has been a partner, a true partner in development. The air corridor, Mr. Prime Minister, that you and I discussed in a meeting in Delhi was translated within a year into something that has made the confidence of the Afghan private sector great. Now, thanks to that initiative and your support, the air corridor is covering over 50 countries. The land corridor, Chabahar to Zaranj and on, is again a symbol of great fortitude, and let me pay tribute to Indian engineers, Indian companies, and Indian diplomats and civil servants who've spared no effort in making these great projects realized. Zaranj, when I was finance minister and we discussed the road from Zaranj to Dilaram, was a backwater. The entire population of it was less than 8,000. Today, it's a thriving city, it's a thriving port, and is going from strength to strength. I cannot count each one of these, but I just want to say that Tagore, we would like to thank Tagore again for having given the Indian people the image of Kabuliwala. And today, on behalf of Kabuliwalas, I would like to say a great thank you to you. Let me just turn to the wider picture in the role of India in this particular context. Mr. Prime Minister, we are in an open moment of history, a moment of great opportunity and simultaneously, unfortunately, great threat and peril. The opportunity is that with the type of political imagination that you've displayed, South Asia can see the full potential of cooperation and advantage of connectivity in Asia can be made. And once again, after several hundred years, the most dynamic economic region of the world. A sovereign, democratic, united Afghanistan is essential to Asia's prosperity, connectivity, and stability. I want to thank you from the bottom of my heart on behalf of the people of Afghanistan and my colleagues in the government for your principled support for the end state of a sovereign, democratic, united Afghanistan. An Afghanistan that would truly enjoy permanent peace, stability, democratic stability, and be sovereign. Sovereignty means that we must have the right to form our partnerships, and those partnerships, as I indicated, flow from value. Peace is the central desire of the Afghan people, and there's a consensus both nationally and within the state to seek peace. But that peace must be a peace that ends violence, not becomes a preface in a chapter to another tragedy. The tragedies of the past must serve as lessons to us so we do not repeat history. In there lies the role of Indian diplomacy. I would like to thank Foreign Minister Jaishankar and Foreign Minister Atmar for their very close collaboration, because this is the moment where regional consensus and international consensus on the need for guarantees for a stable and prosperous Afghanistan are essential. We must ask the world to ask all stakeholders to respect the rules of sovereignty in international relations, stop giving sanctuaries, and stop interfering in the affairs of their neighbors.
The pearl, Mr. Prime Minister, lies in misunderstanding this moment. Peace in Afghanistan is within grasp if parties and their backers in the Taliban embrace a true political solution. But Afghans will not submit to surrender. And it must be understood that our heroic security forces are not defeated, and neither have we lost our will or capacity for serving our people. Should, God forbid, Afghanistan be plunged into uncertainty, the consequences for the region and the world will be dire. The Afghan Defense and Security Forces, the people of Afghanistan, and the government of Afghanistan are the first line of defense for democracy, for stability, and for security. And here, our submission with you is that terrorism must be seen as a full ecosystem, not a series of isolated individuals or groups. This is a destructive force that threatens the future that you and I and all people of goodwill are trying to bring. We must contain this because our long history of millennia of connectivity between Afghanistan and India is one of dialogue, civilizational engagement, tolerance, networks that brings us together. The end state that we seek, again, Mr. Prime Minister, is to serve once again as a roundabout in Asia, as a gate to India that has been our title for centuries, and as a point, as a platform for cooperation. Afghanistan seeks maximum number of friends and does not want to be part of the false quarrels. But we stand for principle, we stand for decency, we stand for democracy, and we stand for connectivity. Once again, Mr. Prime Minister, on behalf of the people of Afghanistan, let me say thank you for these two great gifts. Thank you for believing in the future of Afghanistan. Thank you for your support for an Afghanistan that would be thriving in a hub with India's great support and with your personal attention in a moment when we know every moment is taken to save lives and livelihoods. We greatly appreciate your presence here and take the inauguration of this project as an omen for many more things that we will do in common. Thank you. Thank you, sir. Next, it is my privilege to request the Honorable Prime Minister of India to deliver his address on this important occasion. Your Excellency, राष्ट्रपति गनी, आपके उम्दा शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके साथ उपस्थित अफगानिस्तान के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में देर हुई। हमारा संसद का सत्र चल रहा है और संसद में कुछ कार्यक्रम के कारण मेरा वहां रहना बहुत जरूरी हो गया। आज हम भारत अफगानिस्तान दोस्ती की लंबी राह में एक और माइलस्टोन रखने जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान सिर्फ जियोग्राफी से ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे कल्चर भी आपस में जुड़े रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। ये सदियों पुराने संपर्क हमारी भाषाओं, हमारे खान पान,
हमारे संगीत, हमारे साहित्य में झलकते हैं। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि नदियां विश्व की महान सभ्यताओं की वाहक रही है। नदियों ने जीवनदाता बनकर हमारे राष्ट्र, हमारे समाज को परिभाषित किया है। भारत में हम अपनी गंगा नदी को एक माता का दर्जा देते हैं और उसके कायाकल्प के लिए हमने अपना नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। नदियों के लिए यह सम्मान भारत और अफगानिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत है। हमारे यहाँ ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रशंसा करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने नदियों के शक्तिशाली सभ्यतागत संबंध के बारे में कहा था, जो नदी तुम में बहती है वह मुझ में भी बहती है। साथियों, पिछले लगभग 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साझेदारों में रहा है। अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक सेक्टर्स में हमारी ये योजनाएं फैली हैं। 1 दशक पहले पूले खुमरी से ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से काबुल शहर में बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई। 218 किलोमीटर लंबे डेलाराम खरंज राजमार्ग ने अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी का एक विकल्प प्रदान किया। कुछ वर्ष पहले बने मैत्री बांध से हेरात में बिजली और सिंचाई का सिस्टम सुदृढ़ हुआ। अफगानिस्तान के संसद का निर्माण भारत और अफगानिस्तान की जनता का डेमोक्रेसी के प्रति लगाव का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा। इन सभी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख पहलू यह रहा कि इनसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी अपने आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है। चाहे दवाइयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज हम काबुल में जिस सहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। काबुल शहर भारत के लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। कई पीढ़ियां, जैसे आपने उल्लेख किया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी पढ़कर बड़ी हुई है और इसलिए मुझे विशेष खुशी है कि सहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। साथियों, जब मैं संसद भवन के उद्घाटन के लिए दिसंबर 2015 में काबुल आया था, तब मैंने हर अफगान पुरुष, महिला और बच्चों की आंखों में भारत के लिए बड़ा प्यार देखा था। अब ये अफगानिस्तान में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूं। मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी कि खाने खुद अस्त ये अपना ही घर है। ये बद्रखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत
आपके साथ खड़ा है। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा से हम चिंतित हैं। निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को कायरतापूर्ण ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। हमने हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और हम फौरन एक व्यापक संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं। हिंसा शांति का प्रतिकार है और दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक निकट पड़ोसी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपने क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद से और ऐसे भयंकर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं। भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है जो अफगानिस्तान के नेतृत्व में हो, अफगानिस्तान के स्वामित्व में हो और अफगानिस्तान के नियंत्रण में हो। अफगानिस्तान के अवाम में अंदरूनी एकजुटता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि एकजुट अफगानिस्तान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। अफगानिस्तान की सफलता में हम भारत की ओर से अपने पूरे क्षेत्र की सफलता देखते हैं। हम एक बार फिर सभी अफगान मित्रों को भारत की दोस्ती का पूरा विश्वास देता हूं। भारत पर रखे आपके विश्वास के लिए मैं हृदय से सभी अफगान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आभार भी व्यक्त करता हूं। तशक्कुर, धन्यवाद।